Good evening, everyone. We have on our show today, Wickedly Yours, Personal, Unheard and Unknown, yet another very special guest, Mr. Naval Baheti. I have known Mr. Baheti for several years, and it was quite a chance meeting that I had with him regarding a school function and something that we wanted to get done for the school function. Mr. Baheti has been in touch with me just via WhatsApp, and he keeps on encouraging and saying his wonderful words of encouragement for my blogs or whatever, my book launches and all. And the thing which struck me then when I first met Mr. Baheti and subsequently worked with him for the school work was his focus and commitment to what he promised us. And that has stayed with me, Mr. Baheti. And I consider you a celebrity in a way to be part of our show today. And Mr. Baheti is an entrepreneur. He runs his own company, LOGIX, yes. And that is where I got to know him first. And now he, along with his wife, who wanted to be part of our show, but has just got tied up with something important on a personal front, Miss Jayashree. Yes, and she has been the mind behind starting I think it's an organization basically, or it's a social organization called Friends of the Elderly, which is such a wonderful thought to bring together all the elderly people so that they can connect with each other across Hyderabad and now I think Pan-India. Pan-India as well, that's wonderful. Yes, that is so wonderful. So, Mr. Baheti joins us today for this tete-a-tete and heart-to-heart talk on Wickedlyours. Welcome to the show. Thank you for being part of it. Yeah. Suddenly I am feeling like I am a VIP. So you are. Absolutely. Yes. Yes. So, Ms. Baheti, when you were young and when you were a student, did you see your life journey to be where it was today? Not at all. Absolutely. Basically, I was born in a typical Marwadi family where nobody is really particular about education or anything. Okay. They want you to simply join their family business. Okay. So, बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, otherwise also he is good. ठीक है, थोड़ा सा हिसाब किताब करना है, that's good enough. And that way nobody was there to really guide us what exactly we should do in our life. Like even when I used to ask them what should I do next, even after 10, remotely there was nobody. So somehow I did something in inter, then it changed again in degree, and again it changed in PG, and then I have done multiple PGs in different streams, and finally I have landed into graphic design in management consulting. Okay, all the previous experience they really helped me. So that's all. Yeah, so how did that passion for something like this develop? Because graphic design is pretty recent. Yes. Graphic design actually I have started almost 22 years back. Wow. Honestly, official assignment, actually I hired somebody to do some job, and it was a freelancer. Of course, the budget was lower. So he said, "Sir, I don't have a system. If you can provide me a system, I can work." So of course, I had a system. So he used to sit and really draw something and do something. So he had some personal issues and he left it midway. Okay. And it was there was a deadline. So I was practically searching for somebody else who could conclude that job, but nobody was there. So I used to see what he was doing. So very few tools. Okay, I was aware. Okay, this tool does this text, this tool types text and all that. So I said, okay, let me try. So I've taken a backup of that file and I've tinkered with it. And within a day, okay, I was able to reasonably do the job. Okay. But that's what hooked me to the design. Oh, okay, wow. So that was the beginning. That was the beginning. It was by accident. Yeah. Surely no no preference or no preconceived idea that okay, I should get into designing and all that. And slowly, some people they have seen my designs and earlier I used to just send by email happy birthday or happy Diwali and this kind of greetings. Because at that time there was no WhatsApp or nothing, only emails. So people really started appreciating, "Arey, aapke designs bahut achhe hain. Why don't you do this job for me?" And
That's how slowly it started. And it developed as a full-fledged hobby, then it became a profession. And all my previous experience in say, as an assistant company secretary and then in financial services, in engineering background, all those experiences, they really helped me deliver better to my clients. And that has been going on since last 20 years because I can understand finance, I can understand engineering, I can understand management thoughts. What exactly That they do. See, design is actually what? It's nothing but you have a problem, you come to a doctor, and doctor suggests you a solution. Design means you want to communicate something to your target audience. So design we are not making not for my satisfaction, not for your satisfaction. It should really impress. do the job, Yeah. not impress. Achha, Do the job. Impressing is we are not creating say pieces of art. We are creating pieces of communication. Need to clearly communicate what is intended or what exactly you should get out of it. We, in our language, we call it MWR, most wanted response. What is it you are expecting? Based on that, it has to work in the reverse order. So sometimes the client may not like the design, but we insist, sir, this is what is going to work. And when he realizes after 1 or 2 years, okay, this is what is working, then he will appreciate your work. See, almost 80-90% of my clients are at least 18 to 20 years old. No new clients. No new clients. So when you're talking of this about starting it off as an accidental hobby and becoming a hobby accidentally and then becoming a hobby, then your passion and profession and everything, at that point of time when you would have started, it would be many years ago, as Maitri said, And when the all this was transition not also. there. Yeah. So did companies actually, kind of come onto the bandwagon to say, ki, yes, a graphic designer doing our, the most wanted response or target audience? Was it a kind of thing because of word of mouth, or was it people were realizing ki, this was beneficial for their business? How did it all start? Because you would have got your first clients in some ways. Okay. So I can understand your question clearly. Like, how did I get my clients? Clients, yeah. Because did they really understand कि वो आपका उनके business के लिए beneficial था कि उनको सिर्फ कुछ अच्छा लगा, कुछ नया था इसलिए? This story is slightly long. Okay. Okay, let me try. हाँ. There was one guy called Mr. Raj Tilwani. Okay. He was a manufacturer of noodles. अच्छा. So he had seen me tinkering with the design. So first he came to me, sir, मेरा designer गायब हो गया है, and I just need to change the color of this. I changed the color and gave it to him. Then he came immediately again after a couple of days and he says, "Sir, मेरा एक नया brand launch करना है. Can you do a design of a noodle Packet. I did. Then he got a couple of his friends from the food industry. Okay. And all this was going on parallelly with some other project which I was doing. So I was not full-fledged into this. But that project, unfortunately, it collapsed. So then I was again at a crossroads. Whether I should get back to the job in financial services, which I was doing earlier, or I should get into the design, try this out. Then my nephew, he's a chartered accountant. He had his office in Adarsh Nagar. So he said, okay, why don't you try for 6 months? You can see my office is of really doing good work. We tried out. If it works, it's okay. Otherwise, you can always go back. So it sounded good. It's financially okay. It was not what to go for. And to work for us, I said, okay, 6 months is a good period. So 6 months, I tried and okay. Initially, it was only word of mouth. And subsequently, when the design started working, then another problem which I faced was how to really approach the decision makers. The decision makers, typically, as far as the design is concerned, like a company's logo or a brochure or a presentation, typically the decision makers are top roles. Chairman, MDs, VPs, GMs, not below them. Okay. They don't have any say in as far as the market. That's the big. That's the thing. So approaching them is a big concern. So at that time, Economic Times was very popular in business circles. So I started doing small ads, B2B ads in Economic Times. And that got me a couple of clients. This is almost 20 years back.
economize bottom level, nobody used to be. Only top level. जी जी So that's how I got few clients. And then again, it was word of mouth and multiple factors. With the pandemic, Mr. Baheti, disrupting businesses in such a huge way, and people going online for everything, right from education to business to everything. I would talk about myself a little that I was never a online shopper at all, but it was a necessity, became a necessity, and now I don't want to go out of the house. Now it's become a habit. It's become a habit, so we've done it. But I look for very specific things as a customer. So we have a lot of startups, doing a lot of business these days and putting up wonderful content and a lot of curated stuff. So आपने तब देखा है जब business दूसरे तरह से होता था, आप अब देख रहे हैं and you are innovating with everything, and I'm sure as you said, your sons are into different kind of बिल्कुल trained for something like this in social media. So जो startups और young entrepreneurs जो market में आते हैं, आप क्या कहते हैं कि उनको कस्टमर्स तक रीच करने के लिए क्या चीज बहुत इम्पोर्टेंट है? If you were to like put it on your fingers, 1, 2, 3 things to keep in mind to reach the customer the right way. See, सबसे ज़्यादा the biggest factors which many startups they really fail is they don't understand their customers. The biggest question is who is your customer? First you need to identify what are his requirements. अब आज की डेट में एक छोटे बच्चे के, एक यंगस्टर के और एक एल्डरली के रिक्वायरमेंट्स होती अलग है. So whether you are into services or products or whatever it is, first you need to identify who is your customer. और डेफिनेटली उनके जो कम्युनिकेशन रिसीव करने की मीडिया से या चैनल से वो भी अलग अलग है. ओके, आजकल सब मर्ज हो गए हैं थैंक्स टू ऑल द रिवॉल्यूशन और व्हाटएवर वी कॉल इट, लेकिन स्टिल एट सम लेवल दे आर ऑल डिफरेंट. तो अगर आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सके ठीक से और उसको जो चीज चाहिए वो ठीक से दे सके, पहुंचा सके, तो then there is no problem. Many startups fail because वो क्या सोचते हैं कि फ्रीबीज देंगे हम शुरू में, जैसे जोमेटो हो गया, क्या बोलते हैं, ओला है and all that, जोमेटो है, इतने दिन फ्रीबीज देगी. आज पहले लोग अपने जॉब छोड़ के कैब ड्राइवर बनना पसंद कर रहे हैं. They used to earn around 1 lakh rupees per month. आज उनकी इनकम कम होकर 30-35,000 हो गई. अभी नए लोग नहीं आ रहे हैं. स्लोली ये जो बबल रहता है ना कि भाई पैसे आप फ्री में दो, फ्री में बांटो, फ्री में आप कब तक बांट सकेंगे? एक लिमिट के बाद में somebody has to pay that bill. Yes. That will not come out of here. ठीक है, शुरू में आपको इन्वेस्टर्स मिल जा रहे हैं, फंडिंग आ रही है, आप मन में आ जैसे खर्च कर रहे हो, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा. So identifying your customers and their Identify needs. your customer. आप उसकी नीड्स को समझिए. आज जैसे सिंपल बोल रहा हूँ, आज सब लोग आलसी हो गए. आलसी पहले से ही थे, अब कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए. आप घर बैठे उनको जो चीज अच्छी से अच्छी दे सकते हो दीजिए. आज इवन मेडिकल सर्विसेज हो गई, फॉर एग्जांपल, आपको हर चीज जो से Everything. तो ऑल डिपेंड्स कि आप किसी क्या करना चाहते हैं. Actually, I will ask you, going back to what you said, I was just thinking about it. When you into so many things, engineering, when you decided that it started as a hobby and you decided to make it, have it, take it as a profession, I mean, तभी तो मतलब बहुत मुश्किल. You need guts to do that, because from a very secure thing you're going to something which is not very known. नहीं, मैं डिजाइन तो पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं, आपका एक्सपर्टीज फिर वहाँ उसमें नहीं था. एक्सपर्टीज नहीं था, तो मैं वही 6 महीने मेरा ट्रायल पीरियड था. अच्छा. हाँ, 6 महीने ट्रायल था कि उसमें हाँ भाई, see what really gave me confidence was people appreciated my designs. What you did. हाँ. What I did for them, वो appreciation आना शुरू हुआ. वो बॉडी लैंग्वेज से दिखता है. कमर्शियल से टोटली डिफरेंट. आज पैसे की बात नहीं है. अगर आपके लिए कोई काम कर रहे हैं तो डोंट माइंड पेइंग Yes. for that. अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो आप 100 रुपए भी देना, आपको उसके लिए बुरा दिखेगा. अगर कोई चीज काम कर रही है तो आप 1000-2000 भी देंगे उसके लिए. तो सिंपल सेम लॉजिक इन वर्क फॉर मी, कि जैसे जैसे मुझे रियलाइज किया कि अभी ये लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम, तो फिर स्लोली उसमें और भी डेवलप करता गया. और आज भी जैसे नए टूल सीखना ही पड़ता है, नई चीजें करनी पड़ती है, तो अपडेट करना पड़ता है. 7-6 महीने में आउटडेटेड हो जाती है. ये सारी तो ये आप जो फ्रेंड्स ऑफ द एल्डरली था, दिस वाज
such a wonderful thing when I came to know about it. All this a few years back when you kind of introduced me and you told me that you were doing this. And you kind of give credit to your wife, saying that it was probably a thought process on her part. ये कहाँ से? I mean, how did you think about? आप लोगों ने जरूर डिस्कस किया होगा कैसे क्या करें, तो कहाँ से ये चीज का इतना beautiful thought and pan India कैसे Pan India, हाँ. In fact, I would like to love to talk about this topic about actually. You know, already different social organizations I was associated. She had an idea कि जो माहौल बन रहा है, ठीक है, वृद्धाश्रम वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने लोगों में जो सीनियर्स हैं उनके भी कुछ इश्यूज हैं. Why don't we do something for them? ठीक है, करेंगे. I was busy somewhere and then suddenly एक बार नेट पे कुछ सर्च कर रहा था, तो नाम दिखा एल्डरली. ठीक है, अब थोड़ा सा फील हो गया था, ठीक है, लेट्स वर्क इट आउट एंड कुछ करते हैं. दैट्स हाउ फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली नाम आया. पहले तो हम चेक किए ट्रेडमार्क वगैरह में कहीं किसी और का तो नहीं है, वो नहीं था, तो मिल गया, उसको रजिस्टर करा लिया, सब हो गया. एंड देन माय सिस्टर इज इनटू सोशल सर्विस, काफी सालों से है वो. उनसे बात की हम लोग कि ऐसा ऐसा है एंड अकेले तो नहीं कर सकते, join it. Then we had a meeting, we called like-minded people, उनमें से कुछ लोग join किए, so the group was formed. तो शुरू में हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि करना क्या है, we were not clear. अच्छा, तो सबसे पहले चीज जो ये समझ में आई कि आज जो सीनियर्स का प्रॉब्लम है, एक 2 मिनट एक्स्ट्रा होगा लेकिन एक प्रॉब्लम समझना है. पहले जो एवरेज लाइफ स्पैन था, गूगल का डेटा है 1960 तक, इट वाज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 42 years. आज दिस इज रिप्लेस टू अबाउट 68-70 years. तो 28 साल वहाँ बढ़ गया. दूसरा, पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बच्चा 17-18 साल का होता था, गधे पे बैठ जाता था घर के फैमिली में. आज वो 25-30 साल तक तो खाली प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है, तो उसकी कमाने की एज कितनी रह गई? बहुत कम. और उसको 30 साल एक्स्ट्रा जीना है. इसके पैरेलल और एक फैक्टर है. पहले हम जॉइंट फैमिली में थे, हमारा एक बिजनेस रहता था, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी, सब भाई बहन जो भी है उस पर काम करते थे. आज वो सब खत्म हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई. इवन बच्चे, भले हम तो हमारे जो लेकिन बच्चे आज पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं. सो हाउ डू दे प्लान नेक्स्ट 30 years? फाइनेंशियल बिकम वेरी क्रिटिकल. तो हम लोग क्या किया कि उसके अलावा कुछ अगर प्रॉपर्टीज वगैरह भी है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि फैमिली में बाद में प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट होते हैं. सिंपल सॉल्यूशन था कि एक विल लिख दो, डजंट कॉस्ट टू मच. तो व्हाट वी डिड, फर्स्ट हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह किए. जैसे राइटिंग ऑफ बिल पे मेरा एक फ्रेंड ही है, वेयर शेटवाल एडवोकेट, काफी सीनियर एडवोकेट है, तो उनसे एक 1-to-1 इंटरेक्शन कर रखे. कुछ दूसरे एक छोटे-छोटे एक्टिविटीज किए. लेकिन अब उस टाइम पे ये था कि हमको इसको थोड़ा और पॉपुलर करना है, तो कुछ मास स्केल का इवेंट चाहिए. तो वी डिड अ बिग अंताक्षरी इवेंट, which is a high-tech incident. Actually, हम थोड़ा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस मान लगा दिया, बहुत जगह से मान रहे. That was attended by almost 450-500 people. वो काफी अच्छा रहा, उससे काफी विजिबिलिटी आई फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली को. एंड देन हम लोग और दूसरी एक्टिविटीज कर रहे थे. लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया. लॉकडाउन में फिर हमने क्या किया कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं, तो वी यूज टेक्नोलॉजी. जूम पे हम लोग ऑलमोस्ट 40-50 days we invited some specialists in different fields, health, social, legal and all that, अलग-अलग tools to talk about a specific topic. अभी भी चल रही है वो सीरीज. अभी ये हो रहा है कि मंथली हमारी 2 ऑनलाइन सीरीज है. एक है चौपाल चर्चा, जो लॉकडाउन में से शुरू हुई थी. चौपाल चर्चा में हम क्या करते हैं कि आइदर हम एक डिबेट का टॉपिक लेते हैं, जिसपे everybody is a participant. Okay, even the people There are. is no specialist, nothing. It's just a discussion. जैसे हमारा पहला डिस्कशन था की वर्सेस स्टार. ये एक यूनिवर्सल इशू है और शुरू से है, आज से नहीं, वो बहुत सालों से. तो उस पे होगा. Then recently अभी जो जनरेशन गैप में कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, उसके लिए रिसेंटली हमारा ये हुआ कि ये तेरा घर ये मेरा घर. एंड अभी क्या हो गया, अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी डेवलप हुआ है. आज हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पे खड़े हो.
लेकिन लड़कों को किचन में बता रहे हैं रास्ता क्या है, नहीं। तो आज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स लड़कियों की पढ़ाई की वजह से क्योंकि there's no other the other gender is अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका नाम है पापा की परी। wow. अच्छा, all under चौपाल की चर्चा. I quite like that name. That's Yeah, and it is an interactive session. Interactive session. चौपाल चर्चा में क्या हो रहा है? Either we call some specialist who talks about जैसे इंडो क्रोनोलॉजिस्ट को बुलाया तो वो डायबिटीज के बारे में बात कर रहा है, बोन वाले को बुलाया तो वो बोन के बारे में बात कर रहा है, या कोई और लीगल वाले को बुलाया तो लीगल issues है तो. So then his presentation is there. उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर वो रेगुलर जैसे सेशन होता है वो. लेकिन रेगुलर सेशन में ये है कि चलो हो गया. तो रेगुलर सेशन में ये इशू है कि आज की डेट में ज्ञान किसी को नहीं चाहिए. सबको सब पता है. Thanks to. लेकिन जब इंटरेक्टिव बातें होती हैं और लाइक माइंडेड लोग बात करते हैं तो सबको समझ में आता है कि हम भी कहाँ गलत हैं. उनकी गलती खुद को आईना जब तक नहीं दिखेगा तो नहीं समझ में आएगा. जैसे बात कर रहे हैं, जैसे अभी परसों बात की थी और अब हम आज क्या कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ब्लेम कर रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुन रही. लेकिन आप क्या किए, आप अपने पेरेंट्स से अलग होना है या न्यूक्लियर फैमिली बनाना वो आपकी चॉइस थी, वो बच्चों की चॉइस नहीं थी. वो चॉइस आप उनको दिए. अब वो लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है. तो ये मिरर आपको दिखना चाहिए ना कि आप कहाँ गलत है. तो आपको आज की डेट में वो गाली निकल गई. अब आप उसके बारे में बात करके रो के मतलब नहीं है. अब आपको इसको कैसे समझना है वो देखना है. आपको उनकी बात भी समझनी पड़ेगी. They are not always wrong. Very true. That I totally agree that when you are faced with something, the reality of your own actions, then you realize why those actions were probably right or wrong, and then you are in large part, yourself to blame for it, for your own situations. I just had this question that, reaching out to the elders is such a fantastic thought process, but not many of our seniors are so tech savvy. So how do you counter that problem of getting them on board with the technology? Okay. Thanks to lockdown, most of the elderly, they have become tech savvy. Acha, okay. Second thing is, we always request all the youngsters in the family, the biggest gift, what you can give to your grandparents is teach them how to use a smartphone. Reason being, आपको हर किसी को भजन कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं है. आज 70 प्लस मेरे कजिन हैं, उनको भजन कीर्तन दूर दूर तक पसंद नहीं है. लेकिन राजेश खन्ना बोलो वो कहीं भी आ जाएंगे. तो उनको बताइए राजेश खन्ना के गाने देखना है या मूवी देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके ऐसे सर्च करो. या आपको गीता सुननी है तो गीता भी मिलेगी, रामायण भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. योगा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. सो द पॉइंट इज आज सबकी वर्ल्ड की बिगेस्ट लाइब्रेरी आपके मोबाइल में है. आप उनको खाली गाइड कर दो कि भैया आपको मोबाइल में जाके ऐसे यूज करना. दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर ग्रैंडपेरेंट्स. और बच्चे कर नहीं तो पहले क्या होता था, आप क्या प्रॉब्लम है, लाइए मोबाइल, वो खुद करके दे. दैट डजंट वर्क. आप उनसे करवाइए तो वो सीखेंगे. वेरी ट्रू. आई टोटली एग्री. So lockdown के बाद में things are quite okay. And still if somebody has any problem, शुरू में बहुत फोन आते थे, अरे ये ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. We used to guide them. ठीक है, वो चलता है. अगर ये डिस्कशन में कोई डिसएग्रीमेंट्स होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? मॉडरेटर है ना हमारे. अच्छा, मॉडरेटर. डॉक्टर ब्रदर जानी साइकियाट्रिस्ट So you got the right person on the job for it. Luckily yes, हमारी टीम में काफी अच्छे लोग हैं. मैं तो मैम को भी कई बार पूछती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस हमारे में कुछ काम है. फंडा इज क्लियर. उनके थोड़े इश्यूज हैं, उनको टाइम पास भी हम कराते हैं. बीच में जैसे लास्ट टाइम ऑनलाइन हम लोग पंगारस का प्रोग्राम किए थे तो फैंसी ड्रेस में वही अलग अलग स्टेट के कॉस्ट्यूम में कुछ भी करके भिजाइए तो दैट वाज ओके. उनकी एक एक्टिविटी हो गई थी. तो जब तो चॉइस नहीं थी, अब लेकिन वापस आपको मार्केट ओपन हुआ है तो अब next month we are planning for Antakshari again. It's a nice initiative actually. Because Antakshari is one program वो सबको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है. जी जी. So some parting words for the new generation. आप में इतना एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं
and now with this Friends of the Elderly. So हमारे आगे वाली पीढ़ी, like my son or that generation or little beyond as well, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज बोलता हूँ मैम, अपनी जनरेशन ऑनेस्टली बहुत बेवकूफ थी, कुछ नहीं मालूम था, जैसे तैसे गिरते पड़ते हम लोग सीख गए। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उनको हमारी वो पोजीशन नहीं है कि उनको कुछ गाइड कर सके। दे हैव एवरीथिंग अंडर देयर डिस्पोजल कि वो क्या करना चाहते हैं, फिंगरटिप्स में वो कर लेते। आप उनको रोकिए मत, उनको सब मालूम है क्या करना है। हमको लगता है कि वो 11 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है रात में, रात में वो 2-2 3-3 बजे तक वर्ल्ड में कहाँ से किससे क्या इंटरेक्शन करेंगे, क्या कर रहा है, वी डोंट नो। वो अपना काम कर रहा है। बस बच्चों से एक ही बोलता हूँ, अभी जैसे पहले भी बोला, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल चलाना सिखा दो भैया, सुख पाओगे, आप भी होगे। So thank you so much, Mr. Thank you मैम कि आप बुलाए, मुझे वीआईपी बना दिया, चलो भी बात करने का मौका मिला। बहुत मजा आया आपसे इंटरैक्ट करके, and it is such a wonderful thing to know this kind of a perspective. I mean, you know, I've been seeing your Friends of the Elderly and whatever you've been asking us to be part of, और आप मुझे बहुत बोलते हैं कि मैम जरूर लॉग इन कीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, but with a little bit of a busy schedule, sometimes you're not able to look into that. But the thought process behind the whole thing was wonderful, knowing it, and ऑप्टिक्स कुछ और है जी, जो जरूरी है। हमको जब सीरियस बात करेंगे कोई आएगा नहीं बंदा, हम उससे भैया वसीयत लिख दे, थोड़ा सवाल अपने आप वो बोलने से समझ जाएगा। Very true. Very nice knowing you in a very different perspective, Mr. Baheti. I already only knew you from the point of view of my interaction with you as a professional. So thank you so much for being part of the show. Thank you for inviting me, ma'am. Thank you so much. We had a wonderful few minutes with you. Thank you so much. So, Ms. Baheti, thank you so much. It's been a pleasure actually interacting with you, and I'm so glad I asked you to be part of our show today. So can I just entice you with a small hamper that me and Maitri have put together for our guests? This is, thank you so much. Thank you, thanks a lot. For being Thanks part a lot. of Wickedlyours. Thank you so much. We had a wonderful time. Thanks with you. for Thank you so inviting. much.